सर जो विंडोज अपडेट को बंद करियो बनी विंडोज अपडेट सेटिंग रे जाई बंद करियो विंडोज अपडेट टा सेटिंग रे जाई बंद करियो सेटिंग सर तो बंद करले सेटा पॉज ऑप्शन আছে কিছু দিন पे 7 डेज पॉज होती जे पॉज कर दो माने सही अपडेट होबनी अच्छा वीडियो पढ़ाबो कर्सर एंड रिकॉर्ड एला पढ़ाई जो थे ता ऊपर सर ऊपर आउ भी थिला ऊपर सर fetching data from the customer opening the cursor तो पढ़ाई इतला बोधे opening cursor तो सर ओपन सर गोटे एग्जांपल थिला सेट पाखा के थिला तो टिके चलन सर एट और फेचिंग डाटा फ्रॉम द कर्सर एट थिला और एट वीडियो सर एट opening the cursor तो सर टिके तळु चलले एग्जांपल टा हां तो एट है सर फेचिंग डाटा फ्रॉम द कर्सर fetching data from the cursor declare cursor c employee underscore cursor is select employee id last name from employees table where department id equal to 30 then v underscore employee number employees dot employee id personal type last name be more personal type ro more seta dela then say begin open say cursor ta ko open kala then fetched say employee cursor into v employee fetched mane रिट्रीव करिवो कर्सर वैल्यू गुडा को रिट्रीव करिवो देन सेटा वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करिवो वेरिएबल रे स्टोर करिवो बुझला एडी जे वी एम्प्लॉय नंबर मोर एम्प्लॉय नंबर केते शो कला 114 देन मोर नेम लास्ट नेम ता तार लास्ट नेम ता शो कला बुझला the fetch statement retrieves the row from the cursor at one at a time after each fetch the cursor advances to the next row in the active set you can use the percentile not found attribute to determine whether the entire active set has been retrieved. Consider the example shown in the slide. Two variables employee number and last name are declared to hold a fetched value from the cursor. Examine the fetch statement. You have successfully fetched the value from the cursor to the variable. However, there are 6 employees in department 30, but only one row was fetched. To fetch all row, you must use loop. In the next slide, you see how a loop is used to fetch all the rows, right? Means कौन fetched माने कौन जे जो value गुड़ा हमें retrieve करूचे cursor through से वैल्यू गुडा को वेरिएबल रे मते स्टोर करिया पे फेचेड बोली यूज करा जे मते एमती नॉर्मली भी मु रखि परबी इंसर्ट इनटू करी मु रखि परी बट फेचिंग माने फेचेड करछि एज ए पर्टिकुलर कॉलम आईडी रे तमरो फेच माने कॉलम नेम रे तम फेचेड करछि माने स्टोर करछि बुझला The fetch statement performs the following operation, that is reads the data from the current row into the output PLSQL variable, advance the pointer to the next row in the active set. Fetching data from the cursor continue. You can include the same number of variable into the into clause of the fetch statement as there are columns in the select statement. Be sure that the data types are compatible. Match each variable to correspond to the columns positionally. Alternatively, you can also define a record for the cursor and reference the record in the fetched into clause.
Finally, test to see whether the cursor contains row. If a fetch required no values, there are no rows left to process in the active set and no error is recorded, right? Fetches तम जदि यूज करूछ सेटा कोन तमरा एरर शो करने एज ए पर्टिकुलर वेरिएबल तम डाटा केमति स्टोर हो सेति पे मोर fetches यूज करा जाय. Fetching data from the customer जेमति एडी देला फोन थरे cursor name dala is select employee id last name from employee where department id equal to 30 same tamara query nela एठी ओपन कला तम कर्सर टाको ओपन कला एबे कोन कला जदि गोटे रु अधिका वैल्यू जदि मते वेरिएबल भीतर स्टोर करिवार अछि ताले से लूप रे चले देला. आ पूर्व एग्जांपल टा कोन थला जे सिंगल वैल्यू टाको मोर एक्सट्रैक्ट करी शो करी, राइट? एबे कोन कला मोर देन वन वैल्यू टू जदि मते स्टोर करिवार अछि ताले लूप चले देला and सेठी देला से fetched c employee cursor into तमरा वेरिएबल ना एठी देला तमरा दीटा वेरिएबल ना जोटा कि तमरा दीटा वैल्यू शो करिवो एग्जिट हे गला पारे एग्जिट कर दबो कर्सर रु एग्जिट कर दबो देन तापर साकू डिस्प्ले कर दबो. बुझला? देम दे एडी देख एम्प्लॉय नंबर उडा स्टार्ट कला ना लास्ट नेम उडा स्टार्ट कला एक्स्ट्रा कला पर तापर जेति की तार एम्प्लॉय आईडी जहार 30 अछि तार जेते सब सरी जीवो सब रिट्रीव सरी जीवो देन एग्जिट हे जीवो. बुझला? Close the cursor, loop fetch c employee cursor into employee number last name same दला खाली लास्ट क्लोज स्टेटमेंट टा को यूज कर दे सेटा क्लोज हिजो माने लूप रो एग्जीक्यूशन सला परे कर्सर टा क्लोज हिजो. ओपनिंग पाई ओपन क्लोज नॉट हैं क्लोज नॉट देले कोन असुविधा हो सिम तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो पूरा क्लोज न देले भी किछ असुविधा नै बट बैकग्राउंड रे तमर से कर्सर टा तमर ओपन हिक रहउछ ना जेंति तमे जेता तम सेटा तम टेम्परेरी फाइल जेता तमे मारुछ टेम्परेरी फाइल तो बैकग्राउंड रे रनिंग चलछि ना हला हमगु लागु छै हमर सब लैपटॉप टा शट डाउन हे गेला हमर सब क्लोज हे गेला सब हे गेला बट टेम्परेरी फाइल गुडा तो बैकग्राउंड चलछि से पे तो तमे टेम्परेरी फाइल टा तमे डिलीट करूछ जोटा सेम जिंस है तमे कर्सर टा को जदी क्लोज न करूछ सेटा तमर किछि प्रॉब्लम नै, राइट? तमको फ्रंट देखिबो जे कर्सर मोर ओपन अछि बोली बट बैकग्राउंड तो ओपन हे कि अछि ना ताकू तम क्लोज करिया पे ताकू क्लोज स्टेटमेंट दिया जाय. बुझला? Closing the cursor, the close statement disable the cursor, release the context area and undefined the active set. Close the cursor after completing the processing of the fetch statement. You can reopen the cursor if required. A cursor can be reopened only if it is closed. If you attempt fetch data from the cursor after it is closed, invalid cursor exemption is raised. Note that although it is possible to terminate the PLSQL block without closing cursor, you should make it habit to close any cursor to declare explicitly for free resource. There is a maximum limit on the number of open cursor per season, which is determined by the open cursor parameter in the database parameter file. Then open 50 by default para rahila seta. Bujhla? Process the rows of the active set by fetching value into the PLSQL record. Declare cursor name declare kala same jinsa kale ethi v employee record joda achi seta se personal row type de dela row ta ko retrieve kari dekhebo. Begin open kala seta then loop re seta chalaila, right? Loop re mor chalaila c employee cursor into v employee record cursor ru retrieve karibo store karibo koti v underscore employee underscore record re. Exit when c employee cursor not found. जेता तमरो एम्प्लॉई रो ना कर्सर टा आउ किछि डाटा तमरो फाउंड न करि परिबनी सेता से एग्जिट हे जी एग्जिट हला पर आउटपुट डिस्प्ले कला पर ताकू से क्लोज कर देला से कर्सर टा क्लोज कर देला. बुझला? You have already seen that can define record that have the structure of columns in a table. You can also define a record based on the selected list of columns in an explicit cursor. This is convenient for processing the rows of the
active set because you can simply fetch into the record. Therefore, the value of the rows are loaded directly into the corresponding field of the record, right? Cursor for loop. The syntax is for record name in cursor name loop. Tapre statement tamar rahila and loop rahila. The cursor for loop is a shortcut to process explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, and close occur, right? The record is implicitly declare, right? Implicitly re tamara asibo open, fetch, exit, and close sabu implicit asibo. For loop ta asibo explicit cursor, right? You learn that the fetch data from cursor by using simple loop. You now learn to use a cursor for loop, which is process row in a explicit cursor. It is shortcut because the cursor is open. A row is fetched once for each iteration in the loop. The loop exit when the last row is processed and the cursor is closed automatically. The loop itself is terminated automatically at the end of the iteration where the last row is fetched. For loop केतले exit होबो जेतले तमर last row टा already तमर fetch जेतले हेई जिवो सेतले तमर for loop to exit हेई जिवो, right? The syntax record name is the name of the implicit declared record. Cursor name is a PLSQL identifier for the previously declared cursor. Guideline for explicit cursor, for loop cursor. The do not declare the record that control the loop. It is declared implicitly. Test the cursor attribute during the loop of if required. Supply the parameter of a cursor if required in parentheses following the cursor name in the for statement. Cursor for loop, declare cursor, then cursor name dala is select employee ID last name from employee where department ID equal to 30. Begin for loop dala employee record in C employee cursor. Employee record individually tamara C employee cursor re jibo. तो ये भाबियो जे केताले एग्जिट हबो जेताले तमर एम्प्लॉय रेकॉर्ड उडा सबु एग्जीक्यूशन सरी जिवो सेताले फॉर लूप टा मोर एग्जिट हि बुझला धर 10 टा एम्प्लॉय रेकॉर्ड अछि 10 टा एम्प्लॉय रेकॉर्ड तमर कर्सर रे स्टोर हला कर्सर तापर कोन करला ताकू डिस्प्ले करिवो 10 टा एम्प्लॉय रेकॉर्ड जेताले सरी जिवो सेताले लूप रु से एंड हि लूप रु एग्जिट हि बुझला cursor for loop the example that was used to demonstrate use for a simple loop to fetch that data from the cursor. It is rewritten to use the cursor for loop. Employee record is the record that is implicit declared. You can also access the fetched data with this implicit record. Observe that no variable are declared to hold fetched data using into clause. The code does not have the open and close statement to open and close the cursor respectively. एठी और cursor टाकू open statement दिया है कि cursor टाकू close statement भी दिया है कि variable भी declare है, right? एठी कौन simply जेता मोर for loop रे मोर से जेता तमे cursor ऊपर है for loop जेता तमे यूज करछो ना ताकू open करिवा दरकार ना ताकू close करिवा दरकार से ऑटोमेटिक ताकू रेंज मिल गला ना for loop रो मीनिंग कोन जेता मते रेंज मिल जिवो सेता मु for loop टा यूज करी सपोज 1 टू 10 जे मते शो करिवार अछि तो रेंज मिल गला 1 टू 10 मते आ स्टार्टिंग पय किछि प्रॉब्लम नै कि एंडिंग पय प्रॉब्लम नै स्टार्टिंग ऑटोमेटिक ता पाखर अछि 1 टू स्टार्ट करबो एंडिंग तार ऑटोमेटिक अछि जे 10 जाय जिवो जेता से 10 पार हि जिवो सेता से स्टॉप हो ऑटोमेटिकली तो एठी कर्सर जेता तमे फॉर लूप जेता यूज करछो एठी ता कर्सर टा को ओपन करबा भी दरकार नै एंड क्लोज करबा भी दरकार नै कारण फॉर लूप इटसेल्फ ओपन करबो इटसेल्फ से क्लोज करबो बुझला explicit cursor attribute এটা next class পড়ব ঠিক আছে explicit cursor attribute টা এটা মনে রাখতা 231 এটা কালি আমি পড়ব হলা আর কালি সে जो কইতলা সেটা আমি পঠে দিবি কালি হলা सर टिके ऊपर पेज दे बेटा सर एटी जो डिक्लेयर जो टिके ऊपर सर जो ईएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड जोड़ा सर किसी डिक्लेयर है एरर दबो नेटा ना ना डिक्लेयर तो किसी कोड करा है ना ना कोडा हमर ए जो फॉर एम्प्लॉय रेकॉर्ड ईएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड ईएमपी अंडरस्कोर एटा पा ऑलरेडी तमरो टेबुल रो कॉलम टा एटा ओ टेबुल रो कॉलम टा दे एटा एम्प्लॉय रेकॉर्ड टा जोटा एटा टेबुल रो कॉलम टा राइट
एटा टेबल गुडार वैल्यू गुडा को तुम रिट्रीव करो याकू तो डिक्लेयर करिया दरकार नै से पे कहला ना फॉर लूप रे तमरो वेरिएबल भी डिक्लेयर करबा दरकार नै जदी तुम कर्सर यूज करछो या फिर कर्सर को तमे ओपन और क्लोज करिया भी दरकार नै बुझला ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ଭାବୁଥିଲି ରେକର୍ଡ ଟାଇପ ଟା डिक्लेयर କରିବାକୁ ପଡିଲାନି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ना 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 एम्प्लॉय रेकॉर्ड टा होची तमरो माने टेबल रो कॉलम नेम टा कॉलम नाटा हला एम्प्लॉयज तार ये हला सर एक्सप्लिसिट कर्सर टा एट्रिब्यूट हम काली पढिबो ठीक अछि सर